So good evening friends, Jai Hind to all of you. We're waiting for a few people to join. Let's see. So good evening friends, Jai Hind to all of you. So today's session is basically about many queries I have been receiving about the IB mains examination, where we will be having a descriptive paper. So Jai Hind Shubhankar. So first we'll take a few queries. You can pin in your queries and we will take them, collate them together, and then we will try to answer them one by one. In the meantime, I will also try to address a few of your general concerns or maybe your queries about the IB examination. So as all of you know who have been well versed with how this examination happens, the phase 1 of the IB examination is already over. The results came some time back, and on 9th of June we are having the mains examination. So for that, today's session is basically catering to the approach, and since we have around a week or so left for the examination, so we'll be trying to ensure that the best strategy to go forward in the coming days. So we will wait for the queries from you guys. Apart from that, the queries that we have received, we will try to answer them together so that there is no repetition of questions. Yes. So please pour in your queries. I'll be waiting for around 5 minutes for a few people to join. Shubhankar, maybe you could share the link to other people to join maybe. So in the meantime, let me give you a brief overview about what our today's session will be about. So what we'll be talking about today is basically how to approach the essay paper. So we have a 50 marks descriptive paper, that's the exam that is going to happen on 9th of June. So what we're going to try to do here is demystify a little bit and how we can approach towards that. The essay paper will be approximately about 30 marks, and that holds the bulk of the ability to score high. We will also have a pre-C and a comprehension. So I would basically be catering towards the approach for the essay, the kind of topics that you could be asked in the examination. Hi Preeti, thank you so much. Good luck to you as well. Yeah, so we will be trying to, I will try to give you a few topics that you could really, go forward in the coming days. Apart from that, for the comprehension, I don't think if your English is okay, good enough, you will do decently in that front as well. And for the comprehension part and the pre-C is just like reducing the entire paragraph into 1/3 and all that stuff. So let me come to the essay for the queries that I received, particularly those of you who had asked about the procedure to join the Intelligence Bureau or the RNAW that we call as the Research and the Analysis Wing. We will make a separate video for that, or maybe we'll come live some other day. Today, since only a week or so is left for the examination, so many people, they were anxious because we have the UPSC prelims examination on 16th of June, right? And on 9th of June, we have this IB examination. So those of you who are writing both the examinations, there is no point, there is no need to worry about that. Just bank on your preparation that you've done in the long run. Because whatever you've been reading for your what you call that civil services prelims examination, for example, you would have read your polity properly, you would have gone through the international affairs. For example, what is happening in Gaza currently, what happened in Rafah, right? The over excessive use of force by the Israeli forces, what is happening in Ukraine for that matter. If we come to our domestic shores in the subcontinent, we look in the northeast, we have Manipur, where a lot of it's been burning for quite some time. What is the security situation in Jammu and Kashmir? What is this thing with the maritime security? What is this thing with the left-wing extremism? So I will try to take that up. But basically my idea is
That see, essay paper, you do not need to follow a fixed pattern or a fixed routine. You may come across videos or lectures where you would be asked that you follow this pattern. For example, some people will start with the introduction and then try to mechanically present the ideas that they're going to present in the coming 3 to 4 to 6 pages or whatever 1,000 words you're supposed to write. I personally, since my younger days, I have been very comfortable with essay writing as well. So what I generally follow a very, very unconventional approach. So those of you who do not believe in making a pattern, for example, a structure of that sort, you don't need to be bogged down by what others are saying about that. You need to bank on your own strength. As I mentioned at some other place as well, if you listen too much to what people are telling, you may lose your uniqueness. And the essay paper gives you a lot of opportunity. It gives you a lot of leeway and leverage to showcase your uniqueness. Alright? So that is going to be the approach. If you can be creative enough. See, you don't need a very, very flowery language. You don't need to put words like in poetic verse. But at the same time, I would advise you to at least organize your ideas in a way that the reader is hooked. For example, I'll try to give you a couple of examples. We had this essay topic about pandemic, that the coronavirus had happened, and pandemic, the dark reality of life. So one of the approaches when I wrote one of these essays, so my approach was, so I started with the story. I would take it back to 1945. Like for example, I would start that it is the summer of 1945 and Hiroshima and Nagasaki, the twin cities of Japan, they have just been bombed. Alright. And the entire cities have been grounded down to the rubble. That is what the world believed. And the entire civilization of Japan under that layer of pile of debris. Or so the world would believe. Dunya shayad aisa believe karti hogi. But the Japanese spirit, it rose from the ashes like a phoenix with a samurai spirit. What the idea is I'm trying to say. So, pandemic का सवाल है, pandemic एक ऐसे का topic है. आपको एक Japanese people के लिए उस वक्त वो जो एक nuclear bombing हुई थी, that was kind of a pandemic for them. So when an essay topic comes for you, you have to expand the horizon of your thinking. Don't be limited to exactly what is being said, what is being written in that heading. Try to read between the lines. Try to go deeper and understand the topic there. For example, the pandemic की बात कर रहे हैं, तो pandemic सिर्फ एक medical pandemic नहीं है. There can be pandemic of thoughts, pandemic of morality. Pandemic generally means darkness. So that is what the ideas you need to bring about in that case. For example, since this examination is going to be about intelligence bureau, so I would clearly advise you to bring out a few ideas from the security angle. For example, if we go to the Northeast, we need to have a very, very clear understanding of the root cause of the problem that exists in the Northeast. That is very, very pertinent. For example, when we come down to the shores of in the peninsula, we have the Naxal problem. What is the approach? The government and the Ministry of Home Affairs, it has been vehemently propagating the idea of WHAM, winning hearts and minds. So that approach also needs to be complemented by the 3-tier security architecture that we need to use. For example, we have from the inner layer the core insurgency or the core left-wing extremism insurgents. For them, the strategy has to be eliminate them, because there can be no conversation when there is a bullet. In the second layer, there would be people who would have a certain level of affiliation to those people. They would be helping, sympathizers. For them, you need to have certain canvassing sessions. You will use media, you will use other civil society groups. And for the outer peripheral areas, which are not either towards the government or either towards the the Naxals. For them, the approach has to be increasing the developmental projects.
So the root cause of the left-wing extremism, for that matter, if we talk about, it is basically the development deficit. If we go back to the 1950s and 60s, when the insurgency in Assam, insurgency in Nagaland started, the Naga insurgency, as you know, has been termed as the mother of all insurgencies. So what was the cause at that time? Because there were some external interventions by the Chinese intelligence agencies. They would try to shield, or for example, they would kind of help these people from the insurgent groups. For example, we talk about the NDFB, the National Democratic Front of Bodoland, which called for a separate Bodoland within, the Assam territory. On the other side, we also have these ULFA, the United Liberation Front of Assam Independent. We have different leaders, for example, Ranjan Dayamari. So what used to happen in those times, that these people would hide away across the border. For example, the free movement regime that used to exist between India and Myanmar, the 16-kilometer long free movement regime, that now has been disbanded. That would also kind of help people to cross the borders. So that is the actually what I'm trying to give you an idea here is you need to understand. For example, security का understanding आपको बहुत अच्छे से होना पड़ेगा. You need to get that idea clear in your head. आपको इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो कश्मीर में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं उनको मिलिटेंसी क्यों कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो एक्टिविटीज हैं उसको हम इंसर्जेंसी क्यों कहते हैं. वहां पे सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज नहीं है. यहाँ पे क्या था, बिफोर 370 ऑल्सो देयर वाज लॉट ऑफ that secession, the calls for secession from the Union of India. So these things need to be understood. So again, coming back to how we need to approach in the essay, you try to organize your thoughts. I would suggest just 1 week or so is left. What you can do is, whatever you have read till now, maybe if you have taken some small notings you have made, small short notes you have made, you try to organize those maybe facts. I'll give you an example here. सिप्री की एक रिपोर्ट आती है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स या डिफेंस इंपोर्ट्स की. द वर्ल्ड में कौन सी कंट्रीज डिफेंस इंपोर्ट्स करती हैं, दीज थिंग्स. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट डेटा रेडी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी वाला इशू, वहां पे यू नीड टू कोट MHA डेटा कि 2010 से लेके 2018 या 20 तक हाउ मच इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैव कम डाउन from 8,000 something to 3 to 2,000 something. You come down to the Naxal area, there also, what is the most vulnerable area? If we see into the Dandakarnya, I can't show the map of India here, but if you have the understanding of the Dandakarnya area, where you have that Orissa belt, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, that belt, in that you have this Dandakarnya area that is clearly infested. And there also you have the core area, that is Abujmat. Now, what is the problem there? Because वो जो area है, Naxal infected area है, it is surrounded by a lot of forested tracts. For example, we have a 20-30 kilometer forest area, and it lies at the convergence of 3 to 4 states. Now, as we understand, each state will refuse to take responsibility, and it becomes easier for those Naxals to take refuge. They kind of hide in that territory and they escape. So there what we need is more collaborated approach. Security institutions need to come up. For example, the example of greyhounds in Andhra Pradesh. So that has been a very good answer. Apart from that, you have the schemes like Roshni scheme and all these things. That also is important. So when we talk about the 26/11 attack, what happened in Mumbai in 2008? So that was a clear lapse of our maritime borders. Our maritime borders have been not been attacked thus far, but what 2008 26/11 attacks showed us that we also need to guard that frontier, and it is only after that we formed a multi-agency center, MAC, multi-agency center, where all the different agencies of the country, for example, be it the intelligence bureau, be it the RNAW, be it the police intelligence, military intelligence, the NIA, the NSG, all these would come together and there will be calibrated action. For example, at that golden hour when we need to implement those unique responses, the swift responses from the security establishment, in that case
the time is lost in collaboration. For example, who is going to listen to? So there is a unified command structure there. For example, let's come to the hijack situation. What happens when the hijacking happens? So for that also you have this COSAH, Committee of Secretaries on Anti-Hijacking. There also we have a proper structure that who is going to be reported to. We have a psychologist there to kind of converse with the hijackers. So all these things in detail we can definitely discuss later. What I'm trying to give you an idea, because this exam is going to cater to the security situation, I would advise you very categorically here that you try to have a basic idea of all the important security agencies of the country. What are the major paramilitary organizations? CAPF as we call them, the Central Armed Police Forces, which includes BSF, CISF, CRPF, SSB, all these things. किसका क्या mandate है? असम राइफल्स कहाँ ऑपरेट करती है? म्यांमार बॉर्डर को कौन गार्ड करता है? These things you need to be really clear about. After that, when you come about, what is the government's response? See, अगर आप अपना essay से develop करते हैं, तो you can start with some what do you call it? You can start with some anecdote or maybe some report of, for example, Prime Minister Modi in his session in the UN Parliament. UN said that Swasti Astu Vishwasya. He quoted from the Sanskrit scriptures, which meant that we need to be prepared enough to collaborate and cooperate with the world to have a better consensus. So that approach, you can quote with that and start your essay. After that as well, what we need to do is try to bring solution oriented approach. पहले आप एक context देके highlight कीजिए what are the problems. Maybe briefly you can give the background of the historical background of what that situation is. If you're talking about left-wing extremism, you can start from 1968, Charu Majumdar. What happened in those 3 villages? In Naxalbari, what happened? How the movement spread from Pashupati to Tirupati, वो कैसे आपका Naxal belt फैल गया और अभी कैसे कम हो गया, वो आप present कीजिए. Once you have done that, then the examiner wants to see your solution-oriented approach. In that, what you try to bring best practices, what is required to be done, how we need to amp up our response, how we need to ensure collaboration, and also, for example, counter intelligence का role आप इसमें highlight कर सकते हैं. For example, we have foreign intelligence agencies, ISI is there. ISI tries to disrupt our policies. It tries to create certain subversive activities in our country. स्लीपर सेल्स का नाम आपने सुना रहेगा. तो उस स्लीपर सेल्स में क्या होता है, ये कुछ बंदों को यहाँ छोड़ देते हैं एंड दे गिवन सर्टेन टास्क एंड दे एक्टिवेट व्हेन द रिक्वायर्ड टाइम इज दैट. सो फॉर दैट सिविल सोसाइटी का भी रोल है एक्टिव रहने के लिए कि दे नीड टू बी अलर्ट देन दैट पीपल अराउंड अस हु इज एंगेज्ड इन सबवर्टिव एक्टिविटीज, बिकॉज वी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं. वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट, वी आर अ वेलफेयर स्टेट. And in that regard, we really need to amp up our response and get that collaborative approach ready. So this is a brief idea I would have given you. So we'll stop for a bit and maybe I'll take a few questions if you have any queries specifically. So this is, I've given you a brief background. So if you have any queries, we can go ahead with that. So Mr. Stoic, whatever your name is, any queries from your end? I hope I've tried to address most of the things here. And as far as a little motivation, some were asking, sir, we are feeling tensed and all that. No need to feel tensed about the exam. No exam really can define our worth. And there are people who have failed in examinations and succeeded in life. So try to rise above this societal paradigms. Prepare जरूर करें, but don't make the exam the end all and be all of your life. Be greater than anything that life offers you. Be the person that you're required to be, and be, as I've always been quoting this thing. You don't become an officer after qualifying the examination. You first imbibe those qualities. You have to imbibe those qualities, and then you eventually join the forces, or for that matter, any organization. If, for example, we talk about the intelligence bureau, there, more than your agility of your
what you say, of your body. What we need is the agility of your mind as well. Your mind needs to be very, very alert. That is the idea that we need to understand here. So what I need to highlight for all of you here is, try to categorize your ideas into, don't operate in silos. When we talk about the security setup as well, so there also we cannot operate in silos. The different security organizations that are operating in the country. For example, we have a tri-services command. At the time of conflict, the time of war, who would command? Who would we listen to? The army or the navy or the air force? So that's why we have a tri-services command. That's why we have the joint commands. We have the multi-agency centers. We have the joint intelligence command. JIC we have. So what is the need? That approach you can also use in your essays as well. So that was a brief little bit. Yes, there is definitely there is a theater command. So I was highlighting what is the requirement. Now, apart from that, another thing that is required here is, how do we need to understand the relations with our neighbors? We talk about China. What is the situation with China? I was posted there in the northeast in Assam, so I had the first-hand experience of that as well. So the situation with China is, people believe China wants to take our land in the northeast, but more than that, it eyes the water resources of the Brahmaputra. The waters of the Brahmaputra is the major reason why China has been pulling the strings in the northeast. As well as you see what happened in Galwan as well, in Ladakh mein, बार वो incursions करता रहता है. So in that regard, we need to understand there is more to it than meets the eye. You need to read between the lines as well. So that is the idea and approach here. So if we look towards Bangladesh, and coming back to China again, its string of pearls is we've been talking about for a long time now. And our ex-ambassador Jaiman Singh, he propagated that necklace of diamonds idea. But how far have we been able to put forward our diplomatic outreach? We kind of project ourselves as the voice of the global south. But are we able to get that thing done? So that thing is obviously we need to look forward. Because we cannot be sitting on the fence as a global leader. We cannot be sitting on the fence and claim global leadership. So these are the few things. And any other questions we can take? We'll break for a bit. Any questions you have? Sir, in the essays, can we criticize or name governments? See, always when you're writing the essays, there is always a need of constructive criticism. You don't have to criticize just for the sake of it. आपको critique करना होता है, ना कि criticize करना होता है. For example, you have a certain policy of the government, and since you will be joining the government as well, so I would advise to you exercise caution in that regard. आप clearly criticize ना करें, आप policy को criticize करें, but वो critique करते हुए उसका solution भी present करें. Because when you enter leave the government, you go into any organization, or for example in life also, what is required? You need to be solution oriented. If you always look at the problems, for example, the examiner looks at your essay and he feels that you are only criticizing and you are only putting a very negative connotation sort of things. In that regard, you may not get good marks. Your demeanor, your exposition, because essay gives you a lot of creative liberty to express your thoughts. Essay and interview are two things which are a window for the examiner into your mind. So how do you ensure that in that limited words that you've been allotted, the examiner gets to see what you have in your mind, what is your personality, because your personality gets reflected in the paper. So I would advise, always be solution oriented, even if you have to make a critique of the policy of the government. For example, we may talk about the Agniveer policy. Many people have been criticizing it. So as a person who would be joining the government, you need to exercise due caution and also state that if there is any scope for revisiting of the said policy, there it should be done by the concerned authorities. For example, the Honorable
Defense Minister Shri Rajnath Singh, he has also mentioned that we are trying to review, if we are trying to take feedback from the people who've joined the forces as an Agniveer, and then they will be trying to, you know, kind of get that. The formula of bus sheets work out doesn't work. Definitely that the brother, Kunwar brother, it doesn't work actually. That might have worked in our college examinations, but in these examinations, competitive examinations, we need to present our ideas in a very very coherent manner. हमारे ideas organize होने चाहिए. One paragraph should lead to the other and henceforth. But एक caveat मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि mechanical approach नहीं होनी चाहिए. आपको काफ़ी कोचिंग सेंटर्स में ये बताया जाता होगा कि आप ऐसे ऐसे पूरा पैराग्राफ को कनेक्ट करें. कई बच्चे फिर क्या करते हैं, दे एंड दैट पैराग्राफ एंड नेक्स्ट लाइन को उसको कनेक्ट करते हैं. दैट शुड नॉट बी द केस. लेट योर थॉट्स फ्लो. एंड फॉर दोज हु आर राइटिंग इमीडिएटली, तो फॉर दैट आई वुड एडवाइज अपना रिवाइज करें. ज़्यादा स्कोप नहीं है अभी. बट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, जिनको लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं जो, उनके लिए व्हाट आई वुड एडवाइज इज you can do one thing. You can expand the horizon of your reading. अपनी reading के horizon को broaden करें. Try to read a lot of rich, good literature. आप newspaper पढ़ें, हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, कोई भी अखबार पढ़ें, अच्छे से उसको एनालाइज करें. वो रोज़ पढ़ें आप अखबार. आप अच्छी डिबेट सुने न्यूज़पेपर टीवी पे या यूट्यूब पे, आपको काफ़ी अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे. एक द डिप्लोमैट एक चैनल है, वेबसाइट है, आप उसको पढ़ सकते हैं. IDSA for the defense aspirants as well as for the people who are joining the security forces. IDSA, someone can note that there. IDSA की वेबसाइट आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ से आप अच्छी एक कॉमेंट्रीज आपको मिलेंगी. और आई वुड एडवाइज आप ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ अवॉइड करें, बिकॉज इट वुड काइंड ऑफ बायस योर ओपिनियंस इन अ सर्टेन डायरेक्शन. सो दैट इज हाउ आई थिंक यू शुड गो अबाउट इट. एंड एक और चीज़, क्योंकि ऐसे में एक ही सवाल आप लिख रहे हैं, उसमें ना कटिंग्स अवॉइड करें. अवॉइड एनी कटिंग्स. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वन थिंग यू शुड डू इज डोंट मेक ग्रामेटिकल एरर्स. Yeah, that is true, brother. That is actually outside the preview of our discussion today. Election we can discuss for another day. But yes, that is what happens when political leaders they discuss. That is generally. Let's not go there. Story. Sir, one more point. Do we have to write philosophical essay or factual essays? Because reading essays of UPSC toppers, they write quite philosophical essays with less facts but more. See, that is what I have been advising you. Which exam you are asking me about? Are you asking for the UPSC examination or for the Intelligence Bureau, Mr. Stoic? I would then I will answer that question accordingly. If you are asking for the UPSC, then my answer will be different. If it's for the Intelligence Bureau, ACIO, right? So see, in that case, I would suggest you, because it is actually not a very long essay. It's a 30-mark question, 1 hour paper. उसमें आपको 30 या 40 minutes I think मिलेंगे ऐसे लिखने के लिए. तो I would advise you can avoid writing philosophical essays. आप कोशिश कर सकते हैं कि आप to the point लिखें वहाँ पे. Analysis आपका reflect होना चाहिए. Analysis should reflect in the essay, but at the same time maintain एक थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी यूज़ करें. उसके लिए आपने वाइड रीडिंग की होगी तो आप कर पाएंगे. बिकॉज 40 आपके पास 1 घंटा है, तो द पीपल आई बीन टॉकिंग टू, तो उनको भी मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट कर लें. पहले 10-12 मिनट में कॉम्प्रीहेंशन फिनिश करें और अगले 10-12 मिनट में यू फिनिश विद द प्रेसी राइटिंग. देन यू विल बी लेफ्ट विद 35 to 40 मिनट्स फॉर द एसे. फिर आप आराम से एसे को लिख सकते हैं और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, साफ साफ लिखें. एंड ट्राई टू, एक और चीज़, कुछ डेटा ज़रूर कोट करें. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, अगर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ आ जाता है कि 1% ऑफ इंडियंस दे होल्ड 40.7% ऑफ इंडियाज वेल्थ, तो ये डेटा आप कोट करें. कुछ इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द सोशल अनरेस्ट, यू कैन यूज सम एनेक्डोट्स. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंटरनेशनल सिचुएशन की बात करो अगर आप, तो इंडिया के कुछ ऑपरेशंस की आप बात कर सकते हो. इंडिया की जो सॉफ्ट पावर या डिप्लोमेसी, यू टॉक अबाउट ऑपरेशन राहत, वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री, इन इवेंट्स की आप बात कर सकते हो. और व्हेन वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी, सो डोंट लीव मैरीटाइम सिक्योरिटी. सो बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स देयर. मैरीटाइम सिक्योरिटी में आपका जो अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ पे जो डेवलप करना है कि बिकॉज इंडियन ओशन रीजन इज़ अ वेरी वॉलेटाइल रीजन.
वहाँ पे लॉट ऑफ चर्निंग इज हैपनिंग फ्रॉम द शोर्स ऑफ, यू टॉक अबाउट इंडोनेशिया, मलेशिया टू मेडागास्कर एंड गल्फ, है ना, उस एरिया तक लॉट ऑफ चर्निंग इज हैपनिंग. ये जो मलक्का स्ट्रेट है हमारा सदर्न इंडियन ओशन में, अराउंड $5 trillion ट्रेड passes through that area every year. So that is very important. That understanding for you is very important. That how economics is very, very important for the geopolitics. Now, if we delve deeper into the what is happening in Palestine. Palestine में क्या हो रहा है? Innocent people are losing their lives. But there is more to it than meets the eye. The idea is because US is using Israel as proxy because a lot of resources are there in that area. So I mean, it is a failure of the international community. UN has become more of a puppet of the West. That also needs to be taken care of there. Ukraine में what is happening, and our honorable foreign minister, can we expect any essay? I didn't get your question. Yeah, so the thing is, hello Pankil ji, thanks for joining. Topic Rafa, yes, Rafa too, that's the problem. ऐसे topic में Mr. Stoic, I would suggest आप security से related issues को आप अच्छे से पढ़ लें. For example, you should be well versed with जो मैंने पहले discuss भी कर लिया. आप इस वीडियो को I will put it on YouTube after the session ends. You can watch it there. आप एक चीज़ करनी है, आपने इंडिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके ऊपर आप न्यूज़पेपर, आप गूगल पे टाइप कीजिए इंडिया सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, न्यूज़ वाले कॉलम में जाएं, वहाँ पे रीसेंट जो गुड आर्टिकल्स हैं उनको उठाएं. इफ समवन कैन नोट इट डाउन फॉर द अदर्स, ट्राई टू रीड फ्रॉम द IDSA वेबसाइट, दैट हेल्प्स, दैट डेफिनेटली हेल्प्स. ट्राई टू रीड फ्रॉम गुड लिटरेचर, डोंट गो फॉर दोज की ऐसे 50 ऐसे की वो बुक पढ़ लो, आप उसमें ऐसे रट लो, दैट डजंट वर्क इन ऐसे. If you haven't worked for till now, what is the level of questions? Which exam, Mr. Prince, you're talking about which exam? External, internal, both. So first I'll talk about the internal. You read about the northeast insurgency अच्छे से. नागा इंसर्जेंसी का रूट क्या है, मणिपुर में प्रॉब्लम, माइती कुकी का थोड़ा डिटेल में पढ़ ले. If you need some classes, we can do a short crash course as well. For that we can talk later. But I'll give you the topics first. Northeast में आप पढ़ लीजिए इंसर्जेंसी के बारे में. नागा इंसर्जेंसी, असम में प्रॉब्लम क्या थी, उसमें बॉर्डर स्टेट्स में असम मेघालय में कुछ प्रॉब्लम हुई, वो क्या प्रॉब्लम है. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. व्हाट इज द थिएटर कमांड, बैटल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, IBGs क्या होते हैं वहाँ पे. तवांग सेक्टर में जब ये यांगसे रिज है वहाँ पे, जब चाइना ने वहाँ पे इंकर्शन किया था, व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर. व्हाट इज द सिचुएशन अप नॉर्थ इन तिनसुकिया, ठीक है. म्यांमार में क्या इशू है वहाँ पे, आपका NSCN-IM, इसाक मुइवा, खापलांग and Kachin rebels on that Myanmar front. What happens with the Rakhine state of Myanmar? That thing also need. Bangladesh mein the problem of influx of refugees, because since 1970s, why the Bangladesh liberation war happened? Because there was a lot of refugees being coming into India, and I was reading this article someday that what is the problem, because when we have refugees coming in, the coming of refugees is also a big problem, because you cannot filter out who is joining and who isn't. So it is very difficult from the security point of view. That also needs to be taken care of. Along with that, you also read about India's immediate neighbors. You can mention about how India needs to avoid that big brother syndrome. Nepal, we talk about Bhutan, our all-weather friend Bangladesh, what happened in Maldives, that also needs to be accounted for. So all these things, for that you need to have a very holistic understanding of the topics. That's when you can build a narrative that will get to the examiner. It should not be a random juxtaposition of facts, but a very, very nuanced understanding of the topic at hand. Coming down, I already talked about the Naxal area, but coming down on that area as well, you should understand कि Naxal problem शुरू कब हुआ. You should talk about that Naxal Bari incident. Charu Majumdar, what happened? What is the issue? Where is the government failing? What is the situation on the ground? Don't just write random things. Get in some facts. Get in some very, very important ideas out there. Read some reports. That is Big Brother syndrome. See, Mr. Stoic, इंडिया में क्या बोला जाता था कि इंडिया अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनको डोमिनेट करता है, उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है. तो ये इंडिया पे ब्लेम लगता रहा है, तो हमें उस चीज़ से बचना है. फॉर एग्जाम्पल, अभी अफगानिस्तान को हम भूल नहीं सकते. अफगानिस्तान में इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स रही हैं. US रिट्रीट हुआ वहाँ से,
but the situation remains because Taliban took over, and initially हम थोड़ा हमारा ये approach था कि हम तालिबान के साथ negotiate नहीं करेंगे. We did not negotiate with the Talibanis, but now what is the case? Now we are trying to get there. We are forced to get there. We have to engage there. Pakistan की हम बात करते हैं because that has been the India and Pakistan have had a very very checkered history since 1947. We got independence together, but Pakistan has been a state in disarray. If we talk about the Soviet, occupation of Afghanistan, वहाँ पे क्या हुआ था? The Americans, they kind of sheltered these Talibanis, these mujahids, and once in 1990s, the breakup of the Soviet Union happened. The erstwhile Soviet Union, now Russia, which we call it. What happened? Those mujahids, which were what you call, they were nurtured. Now they needed a refuge, and they were kind of pulled into India. That is what happened. The head of Jamaat-ud-Dawa, the sister organization of Lashkar-e-Toiba, Hafiz Saeed, he was a poster boy back then in 90s. He went to Afghanistan to conduct a lot of operations for the Taliban. So that is where he gained some fame. वहाँ पे उसको एक popularity मिली तो इसको organization में लेके आए वो. अब पाकिस्तान की situation को हमें we have to ensure that we do not tolerate any incursion. अभी देखिए ceasefire violation होती है तो हम उसको बालाकोट हमने किया, वो पुलवामा के बाद, उरी के बाद we did a surgical strike. All of that is fine, but we need to amp up our borders. हमें जैसे अभी जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, टारगेटेड किलिंग्स का एक स्पेक्टर शुरू हुआ है. तो पीर पंजाल एरिया है जिसको हम रजौरी पुंछ एरिया है, विच हैड बीन रिलेटिवली क्वाइट फॉर क्वाइट सम टाइम, फॉर कपल ऑफ डेकेड्स आई गेस. 90s के बाद वहाँ से मिलिटेंसी रिसीड हुई थी और वहाँ पे नहीं थी. नाउ सिंस वी हैव टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इन कश्मीर वैली, नाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड अदर what you say new pastures. तभी रजौरी पुंछ में that militancy is kind of coming up. They're trying to go here and there. Our security forces are doing their best in whatever capacity they are doing, but at the same time हमें as a student who will be writing, हमें इसका एक solution oriented approach लेना है कि हमें किस तरह से लोगों को इंश्योर करना है सेफ्टी, एट द सेम टाइम मेन स्ट्रीम में लाना है. जो कुछ लोग अभी भी मे बी ऑन द बॉर्डर्स सिटिंग ऑन द फेंस, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, ताकि इन द लॉन्ग टर्म post 370 lot of things have changed. Security is much better. The stone pelting incidents have gone down. Lot of other things have improved for the better. But at the same time, we cannot sit on our laurels. We need to ensure that this momentum goes forward, and we need to also I was discussing with one of my friends from the Indian Railway Service. So he said that more than Article 370, the Jammu and Kashmir Railway, which will be operational in some time, that will be the greatest integration factor. So maybe you can mention that in your essay, that railways are going to be the great connecting bridge from India, rest of India and Kashmir, because connectivity is the issue. अभी कोई भी जम्मू आता है तो कश्मीर generally they have to go by flight. So most people, rich people, they afford, they can go take the flights, but through road and through railways, that has not been the case. So that also will be the thing. Now coming about certain peripheral topics. If we talk about women के ऊपर आप पढ़ लें थोड़ा सा, women issues पे you will have to make a few points कि इंडिया में women की situation क्या है, right? Women की inequality की हम बात करें, एक CEDAW convention है, then we have POXO Act के बारे में हम mention करें, crimes against women, then income inequality की बात करें, female labor force participation की आप बात करें, आप उसके साथ आप ये बात करें कि what is the patriarchy. You need to study about the patriarchy as well. What is that problem? But also along with that, get some data, get some facts. जैसे 1 in 3 women in the world is subject to domestic violence or some kind of violence. For example, 1/3 of the child brides are in India. In India में 1/3 of the global child brides are in India. 10.1 crore child labor are in India. All these things you need to include in your answers. That is what is required. So that will make your answer stand out from the rest and give it a more beautiful picture. So that is a little bit. If any topic you want me to discuss, we can take that up briefly, and any other topic you want. That is the point. Absolutely.
Yeah, that's the railway wala point was good because that is going to be a very very important thing in that regard. So anybody who is having any specific queries for that for the exam, abhi aap rising anti-India sentiments in the neighborhood and what are the solutions? Neighborhood is as in neighboring countries you're talking about? Neighborhood, you mean neighboring countries? Please specify your question. Sir, RC or pre-C का language and length tough होगा like CAPF. See, the thing is, I generally would avoid such questions because 2 weeks before the exam you shouldn't be asking this question. But the thing is, what you have to think, if it's difficult, it is difficult for everyone. So exam is always relative, and I generally don't entertain such kind of questions कि difficult होगा कि नहीं होगा. Back on your strength. Back on your strength, go for it. And कहते हैं ना, when you're fighting with it, dealing with a question, fight it out, deal with it, and have faith. Preparation कब तक होती है? Preparation होती है जब तक आप exam hall में enter नहीं हुए. The moment you enter the exam hall, whether it is difficult, easy, or anything, you are going to handle it. And if it is difficult, it is for everyone. And if it is easy, it is for everyone. So you don't have to think कि वैसा होगा कि ऐसा होगा. आपको अपनी तैयारी को एम्प अप करें, आप प्रैक्टिस करें. अगले 8-10 दिन में इफ यू फील आपका प्रीसी और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा अच्छा नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप प्रैक्टिस कर लें. यू ट्राई टू प्रैक्टिस इट. मे बी 5 to 6 आप प्रीसी की प्रैक्टिस कर लें एंड 5 to 6 कॉम्प्रिहेंशन का कर लें. Although I don't feel there is much need, but still you can do. How to win against China's information warfare? We don't see any stats and number of Chinese activities. What we generally see is people's analysis. Yeah, that is a very very good question, Mr. Anonymous. I don't get your name. See, the thing is, एक एक्सपर्ट है पॉल हॉफमैन. अगर आप पढ़े उनके बारे में, अभी नोट कर सकते हैं, पॉल हॉफमैन. समवन कैन राइट इन द कमेंट्स फॉर अस टू सी. पॉल हॉफमैन. सो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर. नो, व्हाट इज हाइब्रिड वॉरफेयर? आज से पहले, मतलब 200-300 साल, 400-500 साल पहले की अगर हम बात करें, जंगें कहाँ होती थी? जमीन पे, मैदानों में. आर्मीज जाती थी, इधर से उधर से आती थी. पहले तीरों से लड़ाई होती थी, फिर मोटर गन्स आई, फिर तोपें आई, फिर गन्स आई. ठीक है. अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा हमने, वहाँ पे टैंक्स, एयर स्ट्राइक्स, ऑल दिस हैपनिंग. बट नाउ वी आर इन 2024. या पॉल हॉफमैन, राइट, 2024. अभी जो जंग होगी वो सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएगी. The wars will not only be fought on the ground but in the cyberspace as well. The countries inimical to India's interest, वो क्या करते हैं? वो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट एक, फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिसी है. फॉर एग्जाम्पल हम फार्मर बिल्स की बात करते हैं, हम उस पर सही है गलत है उस पर नहीं जाएंगे हम. पर जो फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ कंसर्न है कि यार फार्मर बिल्स में लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो लोगों का कंसर्न अपनी जगह जायज़ है. लेकिन अब यहाँ पे मसला कहाँ आ जाता है? ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इस मसले को एक अपॉर्चुनिटी बना लेती हैं. वो ट्राई करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की. नॉर्थ ईस्ट में अगर मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आग में घी डालने का काम फॉरेन एजेंसीज करते हैं. दैट इज व्हाट, अब दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. फॉर एग्जाम्पल, डिसक्रेडिट द पॉलिसीज. किसी एक नैरेटिव सेट कर दो. फॉर एग्जाम्पल, मैं परसेप्शनिस्ट, यस एब्सोल्युटली, दैट इज द थिंग. क्रिएट करना है क्योस लोगों में. लोग, बिकॉज सी पीपल, लोग क्या सुनते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. वो पढ़ते नहीं है, उनको ग्राउंड पे सिचुएशंस की कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे. तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लिसनिंग टू हेयरसे व्हाट इज हैपनिंग इन द. पहले तो मैं, आप जो भी सुन रहे हैं, अगर आप मैसेज आगे भी फैलाएं, आप न्यूज़, क्रेडिबल न्यूज़ सुने, आप कुछ भी मत सुने. बिकॉज योर परसेप्शन इज डिफाइंड बाय what you listen, what you hear, and what you know, the people you live with. इसको अगर जैसे इलेक्शन यूएस में बात हुई थी ट्रंप के टाइम पे कि चाइना, रशिया ने इन्फ्लुएंस किया था, हो सकता है, पॉसिबल है कि वो हो सकता है, बिकॉज
फॉरेन कंट्रीज के पास टूल्स होते हैं कि वो कोशिश करती हैं कि उस कंट्री में इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस। अब इंडिया में इलेक्शंस हो रही हैं, कुछ भी नहीं सुनना। आई विल नॉट नेम अ न्यूज चैनल, सी आई विल नॉट नेम एनी न्यूज चैनल हेयर, बट आई वुड एडवाइज आप एक सिंसियर मैच्योर सिटीजन बने और एक अच्छी कमेंट्री सुने। लिसन टू एक्सपर्ट्स लाइक करण थापर, लिसन टू शेखर गुप्ता, लिसन टू मे बी इंटरनेशनल न्यूज फॉर दैट मैटर। तो अच्छे आप न्यूज सुने, जिम्बोइज्म वाले न्यूज ना सुने। नेशनलिज्म और हाइपर नेशनलिज्म में फर्क होता है। मुझे अपने देश को प्यार करने के लिए किसी के देश को हेट करने की जरूरत नहीं है। इफ आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, आई डोंट नीड टू क्रिएट हेट। सर क्रेडिबल न्यूज का सोर्स क्या चूज करें? इंडियन न्यूज चैनल्स पे मुझे आई वुड सजेस्ट आप प्रिंट मीडिया फॉलो कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, या कुछ यूट्यूब पे कुछ अच्छे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। शेखर गुप्ता आप सुन सकते हैं, या आई थिंक करण थापर सर, ही इज़ रियली गुड। प्रशांत धवन स्टडी IQ, या डेफिनेटली गुड आप चीज़ें आप सुने। तो मैं बात कर रहा था, वो ट्रम्प की बात कर रहा था। सो देयर वाज दिस नैरेटिव कि वो इन्फ्लुएंस, आई विल नॉट गो इन टू मच इनटू दैट फायर जसूजा, डेफिनेटली all that is for you to explore all the good things out there. If we go back in time in history, in 2002-3 में India's one and only best friend is India. Absolutely, that's true. That's what Abhinandan said also in one of the interviews. We have to be our best friend as well. So that is the thing. So if we go back in time in history, 2003, what happened in 2003? 2003 में US manufactured a narrative कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। दे मैन्युफैक्चर्ड अ नैरेटिव एंड दे सेल्ड इट टू द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज जो यूएस मीडिया में आता है वही बाकी पिकअप करते हैं। एंड इवेंचुअली देयर वाज नथिंग टू शो ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज द अंडरलाइंग स्टोरी बिहाइंड दैट? दे वांटेड ऑयल, दे वांटेड द रिसोर्सेज ऑफ इराक। दैट इज व्हाई दैट एंटायर सदाम हुसैन वाला जो ऑपरेशन हुआ, द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, I think I was, yes, George Bush was at that time. We were in school, I guess, at that time, and we were all fed with this weapons of mass destruction. Why I'm trying to highlight this? Because the thing is, as students of internal security, you need to understand that you shouldn't believe in what is going around. So let's not go too much; it will become political for that matter. तो आपको बस ये चीज़ समझनी है कि जो एज अ सिक्योरिटी एस्पिरेंट आपको थोड़ा सा अपना नैरेटिव क्लियर करना है। एंड यू सी, आपको ये भी समझना है कि जो हो रहा है जनरली, वो जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। लॉट ऑफ इट इज़ हैपनिंग। इंडिया के काफ़ी जो इश्यूज हैं, दे आर मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जांपल खालिस्तान इशू की बात करें, बहुत लोग बात करते हैं खालिस्तान इशू के बारे में, तो कहीं ना कहीं इसमें फॉरेन इंटरवेंशन भी होती है। गुड इवनिंग हरनीत, हाउ यू? फॉरेन इंटरवेंशन भी होती है, बिकॉज अभी मैं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट दूं, यहाँ पे इंडिया और EU के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी। इंडिया और EU में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी। व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर द ब्रेग्जिट? जो UK था वो अलग हो गया EU से। अब इंडिया और EU की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बट इंडिया और UK की नहीं है। अब UK को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करनी है इंडिया के साथ, बिल्कुल, तो उनको अपने जो फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब भी उन्होंने इंडिया के स्ट्रिंग्स पुल करने होते हैं, वहां पे जो उन्होंने हार्बर किए हुए सर्टेन एक्सट्रीमिस्ट्स, उनको वो भेजते हैं कि इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करें। नॉट ऑल ऑफ देम आर जेन्युइन वेल मीनिंग पीपल, दे आर पीपल हु आर ऑन द पेरोल ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। गुड लेक्चर ऑन सोशल डिजिटल डिफेंस 4/9। Let's see, Mr. Stoic. I think we can. I have this group on Telegram. I will share the link in the story or somewhere. If someone has the link and share in the comments, you can join there, and we can plan a short course, maybe 4-5 days short course. China के facts and figure कहाँ से ढूंढें, or links in your knowledge. I think you don't need to go too much into that. I would advise don't go too much into finding facts there. बट यू नीड टू ओपन सोर्स में जो भी आपको मिलता है वो आप फाइंड करें। जैसे अब इंडिया हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना, इंडिया में और चाइना में जब मसले बढ़ जाते हैं तो भाई ट्रेड टाइज तोड़ दो। अब $135 बिलियन का ट्रेड है, $135 बिलियन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और उसमें
हम 118 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ 17 बिलियन डॉलर हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा हमें होगा, चाइना को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो जिंगोइज्म आ जाता है ना कि चाइना का ये बैन कर दो, चाइना का वो बैन कर दो, वो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली सरकार कदम उठाती है, सरकार धीरे 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 अपना जो फूड बास्केट है, अपना जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, उसको डाइवर्सिफाई करती है। अभी जो चीज़ें चाइना से आ रही, फॉर एग्जांपल सोलर जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत वहाँ से आ रहे हैं। हमारे जो APIs होती हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, 80% वो चाइना से आ रहे हैं। तो हमारी दवाइयाँ कैसे बनेंगी, फार्मा सेक्टर हमारा हो जाएगा। If we were asked in the interview to pick a side on or against the LGBT culture rising in India from the West, what we would answer, diplomatic answer. इसमें I mean LGBT, it's their own sexual orientation. We should, I think it is a very pertinent question also. It is not rising from the West. It is a situation that these people are facing, and we need to respect that. We need to recognize the rights of these people, the LGBT community. We need to recognize, because since history, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, वर्षों से उनका शोषण होता आया है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ नहीं मिलती है, एंड दे आर कंडेम्ड। मिस्टर स्टॉइक, मिस हरनीत, इफ यू कैन शेयर द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट्स, और आफ्टर द सेशन वी कैन टॉक अबाउट दैट, वी विल सी दैट, और मे बी यू कैन मेंशन इनबॉक्स कर दीजिए यहाँ पे, हम बाद में बात करेंगे उस बारे में। तो LGBT की हम बात कर रहे थे, तो they are denied employment opportunities, they are condemned to beggary, prostitution, because they don't have a respectable life to live. So definitely we need to stand with them, we need to respect their sexual orientation as well. They face communal backlash and insecurity. Absolutely, they need a healthy recognition. We need to rise above all this. We as people of this human race, we need to recognize the rights of there are so many subaltern narratives going around. What we, coming from privileged backgrounds, we cannot understand, but children are being taught in schools that they can pick their own genders. Who are parents to tell that which gender? Anyways, let's not go there. That will be a different discussion. For that matter, let's not go too much into that. The idea is to respect the situation and condition of everyone around there, because we need to, as people, as good humane people, we need to have empathy for the people around us. Empathy होना बहुत ज़रूरी है. We need to consider the situation which other people are going. What is happening in Rafah right now? What is happening in Rafah? We need to have empathy. Innocent children being buried under rubble. Anyone would be shaken by that inhuman practice. So true, sir, but our government defense system doesn't recognize. See, we are moving in that direction. Government, that is not for me to comment here. Definitely you should write in its favor, but I cannot comment on that. Government should be taking that. That's a policy decision for the people at the top to decide. But yes, definitely on a humanitarian angle, we should definitely include that. Any other questions? Or I'll take another couple of questions and then maybe we'll conclude the session. I have tried to answer a few of your questions, most of them I guess, and और अगर UPSC के ऐसे की भी जो लोग मतलब people who are appearing for UPSC also, see the essay has to be, essay is the window to your mind. essay और interview आपके mind में घुसने के लिए एग्जामिनर को एक अपॉर्चुनिटी है. आप इंटरव्यू, कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करा दो सर 2 इट वाज अ ग्रेट सेशन, टाइम जस्ट फ्लू. या डेफिनेटली थैंक्स कवर. इंटरव्यू में क्या होता है, लोग कहते हैं कि 2 दिन में इंटरव्यू की तैयारी करा दो या 2 महीने में करा दो. सी, इंटरव्यू की तैयारी 2 दिन में नहीं होती. इंटरव्यू की कुछ तैयारी नहीं होती. बेसिकली द मोमेंट यू वर बॉर्न एंड ऑल द मोमेंट्स दैट यू हैव एम्ब्रेस्ड ऑल दिस लाइफ, दैट इज व्हाट मेक्स यू अ पर्सन. I believe you need to keep working on all the good things that you can do. Try to, people who thank you sir, this suffice, but we do need guidance for the essays, not only for IB but in upcoming CF. Definitely Mr. Stoic, UPSC ग्रुप है एक इंस्टाग्राम पे, UPSC कोच करके मेरा एक पेज है.
वहाँ पे so what are your thoughts about life, ordinary हो या ज़्यादा ordinary होनी चाहिए? Just wanted, I did not get your question. What are your thoughts about life? Please specify your question. मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका. तो मिस्टर स्टॉइक हम करेंगे इस पे, CAPF पे भी या UPSC के लिए भी अगर आप चाहिए. एक UPSC कोच करके ग्रुप है, मैं उसका लिंक डालूंगा. आप शायद स्टोरीज में भी कहीं होगा, आप वहाँ पे टीम हैंडल करती है उसको, आप वहाँ पे मैसेज करें तो हम एक कुछ क्रिएट करते हैं. इफ़ यू वांट सर्टन कोर्सेज कमिंग अप वी कैन ट्राई. आई विल हैव टू मैनेज दैट, बट या लेट्स ट्राई टू डू दैट. और हम इंटरव्यू की बात कर रहे थे, तो इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है. इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. It is the reflection of what you are as a person. It cannot be nurtured in a day or a two. I will conclude with this little story that I tell. There was this king in some village, in some kingdom back in the day. तो उसने अपने महल में एक नया मंदिर बनाया. He constructed a new temple and he wanted a new, कहते हैं ना, मूर्ति एक स्थापित करनी थी उनको वहाँ पे. So he went to the best sculptor, एक बड़े ही होनहार शिल्पकार के पास वो गए वहाँ पे. एंड ही टोल्ड हिम, आई टोल्ड दिस स्टोरी मेनी टाइम्स बट आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड एप्ट हियर. तो ही टोल्ड हिम कि मेक अ ब्यूटिफुल स्कल्पचर, एक मूर्ति बनाओ एंड आई विल पे यू. मुंह मांगा आपको जो भी इनाम मिलेगा. एंड दैट पर्सन, दैट स्कल्पटर, उसने गया, वो पहाड़ से एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर निकाल के लाया वो, और उस पर अपना वो हथौड़ी और छेनी से वार करने लगा उसको तराशने के लिए. लाइफ लेस ऑर्डिनरी, लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आई विल आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर द स्टोरी. आई गॉट योर क्वेश्चन. सो वो तराशने लगा उस हथौड़ी से, एंड क्या हुआ, वो पत्थर चिल्लाने लगा. पत्थर को दर्द हुई कि मेरे पे हथौड़ी का वार हो रहा है, एंड उसने फिर से कोशिश किया, लेकिन वो पत्थर उस वार को सह नहीं पाया. तो उस शिल्पकार ने उस पत्थर को उठा के साइड पे फेंक दिया. वो फिर से गया, एक और पत्थर उठा के लाया, और उस पे उसने फिर करना शुरू किया अपना काम, अपना जो तराशना शुरू किया. इस वाले पत्थर ने कुछ बोला ही नहीं, आराम से अपना वो वार सह रहा है. तो इवेंचुअली क्या हुआ, बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बन गई. हाँ बिल्कुल, आई हैव टोल्ड दैट बिफोर फॉर सम अदर ऑडियंस हु मे लाइक इट, बिकॉज आई लाइक इट वेरी मच. तो एक महीने बाद जब राजा आया तो उसको वो मूर्ति उसने दी. बहुत खुश हुआ राजा, और उसने मतलब मुँह मांगी उसको रकम दी. रास्ते में जाते वक्त उसको ठोकर लगी उस पत्थर से, जो दूसरा पत्थर था, पहला वाला पत्थर जो चिल्लाया था बहुत अपनी हथौड़ी की वार से. तो राजा ने बोला कि ये पत्थर मैं ले जाऊं, मुझे आपको, कहता राजा जी आप ले जाइए, किसी काम का नहीं है. तो राजा उस दूसरे पत्थर को भी ले जाता है जिसके अंदर जो मूर्ति वो तराश होनी थी वो हो नहीं पाई थी, बिकॉज वो बहुत चिल्लाया मार से. तो वो अपने मंदिर में जाके जो मूर्ति बनी थी उसको मंदिर में स्थापित किया, उसकी पूजा अर्चना, हार श्रृंगार जो होना था सब हुआ. और जो दूसरी जो मूर्ति थी, सॉरी दूसरा जो पत्थर था जिसको मतलब जो वार नहीं सह पाया, उसको सीढ़ियों पे रख दिया गया. और उसका काम क्या था, जब भी मंदिर में आता था कोई, नारियल लेके उस पर फोड़ता था. तो इसमें सार क्या है, द स्टोरी, द बॉटम लाइन इज द पर्सन हु टॉलरेटेड द स्टोन, दैट टॉलरेटेड द पेन, दैट abrasions, that rupturing of its entire existence, that became a beautiful, that sculptor that was worshipped in the temple. And the other one, जो दूसरा था, जो वार नहीं, वो पूरी जिंदगी उसकी ठुकाई हुई. जिसने पहले ठुकाई बर्दाश्त कर ली, वो मूर्ति बन गया. और जिसने तब वो दर्द से डर गया, उसकी पूरी उम्र उसको पत्थर से, नारियल से फोड़ा जाएगा. तो दैट इज द लेसन that I generally share with students, the young boys and girls out there, कि लाइफ में अगर कोई तकलीफ, कोई वार आप पे हो रहा है ना, उसको बर्दाश्त करें. वो तराशे जा रहे हो आप, तराशे जा रहे हो आप, और जब तराश के निखर के आप बाहर आओगे ना, बिकॉज कहते हैं ना सूरज जैसा जल बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, तो जलिए. दैट इज हाउ यू गोइंग टू शाइन एज अ पर्सन, एंड दैट इज आवर मिशन. लाइक मुस्कान, द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, life ordinary or extraordinary? See, life ordinary or extraordinary, it's not the point. The point is, क्या वो लाइफ आपकी है? मैं कल ही किसी फ्रेंड से बात कर रहा था कि we were having a discussion on one of the topics. One topic पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ ऐसे करना है. someone is suggesting me that. तो मैंने कहा यार देखो, लाइफ
में अगर हम फेल हो जाएं, कोई हमने डिसीजन लिया है, वो डिसीजन सही हो या गलत हो वो मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है, क्या वो डिसीजन हमारा है. दैट डिसीजन हैज टू बी अनअपोलोजेटिकली आवर्स. वी लिव 70 एंजाइटी वाला क्वेश्चन विल टेक आफ्टर दिस. 70 years we live on this planet. 70 साल की हमारी जिंदगी है, उसमें हम लोगों के थॉट्स, लोगों के आइडियाज, लोगों के व्यू पॉइंट्स, लोगों की जजमेंट्स, उनसे डर के कुछ फैसले नहीं करते. दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. तो जब हम इस चीज से डरते रहेंगे तो हम लाइफ अपने टर्म्स पे नहीं जी पाएंगे. मैं ये नहीं कहता अपने पेरेंट्स की ना सुनो, अपने एल्डर्स की ना सुनो, अपने फ्रेंड्स की ना सुनो, सुनो सबकी, बट करो जो आपके कोर प्रिंसिपल्स को अलाइन होता है. मुझे तो ये लगता है ज्यादा एडवाइस नहीं लेनी चाहिए लोगों से, किसी से भी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इनसाइड अस देयर इज अ reservoir that is waiting to explode. For that you have to connect with yourself. अपने आप के साथ कनेक्ट करना is absolutely very very important. I mentioned in one of the podcast जो अभी मे भी कल आएगी, उसमें मैंने ये बात भी की है कि you listen to the crowd too much and आप अपनी यूनिकनेस को न्यूट्रलाइज कर देते हो. फिर आप क्या, आप भी भीड़ बन गए. भीड़ नहीं बनना है. अभी एग्जाम्स की बात की आपने, एग्जाम फेलियर और डिप्रेशन की बात की आपने, एंजाइटी की. देखिए एक चीज़ मुझे एक चीज़ से बड़ा एक कभी कभी परेशानी होती है, बिकॉज मैं उस फेज से निकल के आया हूँ खुद. हम सब एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं. हम डील करते हैं प्रॉब्लम से, अपनी लाइफ में फेलियर से डील करना पड़ता है हमें. पर एक चीज़ मैं जो कहूँगा कि हमारी सोसाइटी में अभी हम 1980 में नहीं जी रहे हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी. वी आर इन 2024 और सरकारी नौकरी का ये जो हमारे ऊपर भूत सवार होता है कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी है, हमें गवर्नमेंट सर्विस में आना है. आई थिंक इससे भी ऊपर उठना अब वक्त आ गया है. आप देखते होंगे अपने आगे पीछे आर्मी ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, IB ऑफिसर्स, हुएवर. आप किसी को ना ऐसे आसमान पे मत बिठाओ. मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क. आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है. वैसे तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ लाइफ में अचीव भी किया है. मतलब आई फील देयर इज अ लॉन्ग वॉक्स टू गो. कहते हैं ना, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड promises to keep and miles to go before I sleep. A lot of miles to cross yet, but I would believe आप में और जो बंदा किसी एग्जाम को क्वालिफाई करके कहीं पे सो कॉल्ड, मैं ऑफिसर भी सो कॉल्ड कहूँगा, सो कॉल्ड ऑफिसर बन गया, आप में और उनमें फर्क नहीं है. एक एग्जाम आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं कर सकता. अगर आप हो और आपका दोस्त है, दो लोगों ने तैयारी की है, दो लोगों ने तैयारी की है, दोनों ने बराबर मेहनत की है. एक 50 नंबर कट ऑफ गया है, एक का 50.5 आया, एक का 49.5 आएगा. तो क्या वो 49.5 वाला कम होशियार हो गया? तो एग्जाम में सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट योर हार्ड वर्क. सॉरी, इट इज ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की आप बात करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. लक फैक्टर भी आता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेहनत ना करें, मेहनत इतनी करें कि आपसे बेहतर कोई मेहनत ना करे उस फील्ड में, मेहनत उतनी करें, लेकिन उसके साथ ही इतना मादा रखें अपने अंदर ये मादा रखें कि अगर आप उस चीज में कामयाब, सो कॉल्ड कामयाब नहीं होते हैं अगर, तो आप उस चीज से आगे बढ़ जाएं. लात मारो उस चीज को जो आपकी सेल्फ वर्थ को कम करती है. पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स आपको पेरेंट्स को समझाना ही नहीं है. पेरेंट्स को तो समझाना ही नहीं है, आपको खुद समझना है. पेरेंट्स की जनरेशन में और आपकी जनरेशन में बहुत फर्क है. वो आपसे पिछली जनरेशन के हैं. तो अगर आप कोशिश करेंगे कि उनको समझाने में, उसमें टाइम वेस्ट मत करें. आप खुद समझ जाएं, यही बहुत काफ़ी है. आप किसी दूसरे इंसान को, अब मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा शायद आप ना समझें. मुझे समझाना नहीं है आपको, मुझे बस अपना एक आइडिया दे देना है. जो रिसेप्टिव होगा इस आइडिया के, वो उस आइडिया को कैप्चर करेगा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा. दैट इज द परसेप्शन. तो गवर्नमेंट जॉब्स गलत नहीं है, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना अच्छी बात है, IB, आर्मी, एयरफोर्स सब ज्वाइन करें आप, लेकिन वो अपनी जिंदगी का एक ही मापदंड बना देना. देखिए लक्ष्य मूवी बना के आप आर्मी में रिक्रूट कर रहे हो,
ठीक है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी, आई एम प्राउड ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, आई एम प्राउड ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बट वो ही एक लोता तरीका नहीं है देश को सर्व करने का। देश को सर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक स्वीपर क्या देश की सेवा नहीं कर रहा? अगर कल सारे स्वीपर हड़ताल कर रहे हैं, देश का क्या हाल होगा? तो डिग्निटी ऑफ लेबर का एक अप्रोच जो हमारे देश में वेहमेंटली एक फर्दर करने की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वो वक्त आ गया है। द टाइम इज राइट नाउ, द टाइम फॉर राइजिंग फ्रॉम दैट रबल इज राइट नाउ, वी नीड टू राइज नाउ। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ दी ऑप्शन। और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पे मत जाएं, आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना एक्स फैक्टर फाइंड करें। आप व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? इफ आई टेल यू अबाउट माई लिटिल स्टोरी, आई वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट। ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट की जॉब अच्छी नहीं, कॉर्पोरेट की जॉब इज वेरी गुड, बट मेरे लिए नहीं थी वो। आई वॉज वर्किंग एंड आई वॉज राइटिंग पोइट्री देयर। सो इट इज नॉट कि कोई जॉब अच्छी है कोई जॉब बुरी है, सब जॉब इक्वली गुड है। एक जॉब में अभी हमारे देश में क्या होता है, एक पेडेस्टल पे बिठा दिया जाता है। कोई एक एग्जाम क्लियर करने से हम इस पेडेस्टल पे बिठा देते, वैसा नहीं। सबकी सेल्फ वर्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है। देखिए, इट इज ओके टू बी डिफीटेड बाय फेलियर्स, बट इट इज नॉट ओके टू बी डिफीटेड इन लाइफ। डोंट लेट समथिंग डाई इनसाइड यू बिफोर यू एक्चुअली डाई। लाइफ का पर्पस समझे, भेड़ चाल से बाहर निकले, अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग करें। मेरा पर्सपेक्टिव, मतलब ये डिस्कशन कुछ और टॉपिक पे थी, हम किसी दूसरे मोटिवेशनल सीरीज में चले गए। द आइडिया इज आप थोड़ा सा अपने आप को एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने। अनेकांतवाद का जो कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में, उसमें वो एग्जाम्पल देता है कि एक हाथी है और 5 अंधे लोग हैं। अब 5 अंधे लोग हैं, एक अंधा जब हाथी की सूंड को पकड़ेगा वो सोचेगा कि ये पेड़ का तना है, कोई उसकी पूंछ को पकड़ेगा सोचेगा कि रस्सी है, कोई उसके पेड़ को हाथ लगाएगा तो बोलेगा कि ये तो दीवार है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हाथी दीवार है या पूंछ है या तना है, वो सब कुछ है। लेकिन हम इंसान, वी आर लिमिटेड बाय आवर ह्यूमन इंटेलेक्ट। हम उस चीज की पूरी अक्सरियत को नहीं देख पाते। वी कैनॉट सी द थिंग्स इन इट्स एंटायरिटी एंड वी थिंक जो हमें पता है वही सही। ऐसा नहीं है। ऑलवेज बी ओपन to new experiences, new opportunities, and that is about it. Work hard in your life and never doubt your capabilities. And वही है, 2 roads diverge in the yellow wood and take the one less traveled by and you will make the difference. That is my lesson for today and I think that should be it. It was a lovely session interacting with you guys and we'll join again. If you guys need any other sessions, we'll come more often and I wish you all well. किसी को कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज हैं IB के एग्जाम को लेके? थैंक यू अभिजीत, आई होप आई आंसर। थैंक यू मिस्टर कुनवर, आई होप आई वाज एबल टू आंसर। थैंक्स मुस्कान, थैंक्स अगेन। आई होप आई वाज एबल टू आंसर अ few queries and if you need any other assistance on anything related to government exams or for that matter otherwise as well, feel free to drop in your messages. I may not be able to answer like very quickly, but yes, I will get back to you guys. That is the approach. Hi Naresh, thanks for joining the session. Yeah, so that was about it. I wish you all very well and that's about it. See you folks next time and Jai Hind to all of you. Thank you. See you next time.